Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss or discover our topic with the help of AHP expertise. Today's our topic of discussion is chronic inflammation. Now the contents we are going to discuss are definition of the chronic inflammation, causes of the chronic inflammation, morphological features, major cells, role of macrophages, product of activated macrophages, role of other cells, granulomatous inflammation. Definition: chronic inflammation is a response of prolonged duration, whereas acute inflammation is a response of a short duration, such as it happens whenever the infections or inflammation happen. Its onset, its duration is within minutes to days, while the chronic inflammation response is weeks or months, in which the inflammation and tissue injury and attempts at the repair coexist in various combination. They all processes are occurring, whether inflammation and tissue injury are occurring together, or tissue injury or repair coexist whatsoever. There are different combination in which they act. Now you should be able to differentiate the chronic inflammation from the acute inflammation. Acute is a rapid, where a chronic is a delayed. Acute inflammation shows the common signs such as hotness, redness, pain, whereas the chronic inflammation usually don't. Then other than that, main mononuclear cells which are involved in acute inflammation are neutrophils, while the cells involved in infiltration of the chronic inflammation are macrophages. We will discuss it furtherly. Now the causes: the persistent infection. The example of the persistent infection could be a viral infection or any bacterial infection which is continuously present in your body and leading your body to produce an inflammatory response for over a long period of time. Now, in which you can take एग्जाम्पल ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी. एलर्जी तो आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी में आ जाएगा. सो persistent इन्फेक्शन में आपके पास ट्यूबरकुलोसिस could be the example of your persistent infection. Other than that, we have a hypersensitivity disease. Hypersensitivity disease is a more hypersensitive. The name indicates it is more than sensitive, a response of our body system, and which is not normal, or immune mediated inflammatory system, in which immune system is involved in the inflammatory diseases. Now hypersensitivity and immune mediated or hypersensitivity diseases or immune mediated inflammatory diseases, the antigen is either a pollen or a dust particle which to whom humans are not normally allergic, or which are not normally pathogenic, or human body don't respond to them. So in these diseases, our body consider it as an antigen and produce antibodies against them. While immune mediated inflammatory diseases are the diseases in which our body considers our own cells antigen as a foreign antigen or a foreign body, and produced antibodies against these antigens. और यू कैन सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं कि अपनी ही बॉडी के एंटीजन्स के अगेंस्ट अपनी ही बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है. एंड यू ऑल विल बी वेल अवेयर ऑफ इट that whenever there is an antigen antibody complex, our body go under a complex series of function in which complement system activate, our immune system activates, and it will lead to many of the tissue injury or clotting and whatsoever. There are so many processes which happens. persistent infection भी देख लिया आपने. अगर आपके पास persistent infection है, जैसे आपके पास TB है, there is exposure
टू द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम। तो वो हो गया। हाइपर सेंसिटिविटी में आपके पास कोई भी डस्ट पार्टिकल हो गया, पोलन हो गया, उसके अगेंस्ट हम आपके पास जो है ना वो टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यूसिनोफिल्स जो भी आपके पास लिकोसाइट्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। इम्यून मीडिएटेड में आप रूमेटाइड आर्थराइटिस जो ले सकते हैं, जिसमें आपकी बॉडी के जो एंटीजेंस होते हैं उसे के एंगेज एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट, आपके पास कोई भी टॉक्सिक एजेंट होगा उसके साथ आपका प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा, जैसे कि आपके पास कोई सिलिका आ गया, जिसमें वो आपके अगर आप किस भी ऐसे एरिया में काम करते हैं जिसमें सिलिका बहुत ज़्यादा है और वो आके आपके लंग में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फॉर अब टाइम बिंग तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता, लेकिन आफ्टर अ प्रोलॉन्ग टाइम इट मे कॉज अ डिसफंक्शन ऑफ द लंग्स, so it is known as a potentially toxic agent and it is called as sclerosis. Silicosis, sorry, it causes silicosis, सिलिका की डिपॉजिट सिलिकोसिस। रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जैसे कि आपके पास पोस्ट करो you have a patient have a peptic ulcer, it got treated, then again it undergo a ulcer again, and then again and again it goes under a ulcer, and this result it may lead to chronic inflammation because there will be a damaged tissue, it is not healed, it is unhealed completely until now, or it again exposed to the pathogenic vector may lead to the incomplete healing, and the incomplete healing for a long time may lead to fibrosis. सो आपके पास ये फैक्टर्स होते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में रिकरेंट अटैक हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है, हाइपर सेंसिटिविटी है और परसिस्टेंट इन्फेक्शन है। अदर देन दैट वी हैव अ मॉर्फोलॉजिकल फीचर मोनोन्यूक्लियर, जिससे मैंने आपको बताया था इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशंस में आपके पास न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस होते हैं, जबकि आपके पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपके पास न्यूट्रोफिल्स नहीं होते, आपके पास मैक्रोफेजेस प्लाज्मा सेल्स यानी और टी सेल्स होते हैं। टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस होती है, एक्यूट में टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस नहीं होती है, फॉर टाइम बिंग इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सेल्स होती है, और प्रोलिफरेटिव एंड द चेंजिंग अटेम्प्ट एट हीलिंग मीन एंजियोजेनेसिस होती है, फिब्रोसिस होती है। जबकि आपके पास एक्यूट होता है उसमें आपके पास फॉर टाइम बिंग वेस्कुलर चेंजेस आती हैं और टिश्यू में एडिमा वगैरह होता है, बट इट गॉट रिजॉल्व। But in this case, there is a rupture of the vessels, and it may lead to the formation of the new vessels, and the damage of the tissue or necrosis of the tissue may lead to the formation of the cause of the fibrosis. क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स हो गए। मैक्रोफेजेस का ओरिजिन क्या है? हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल हैं, प्रोजेनिटर सेल हैं। सर्कुलेटिंग सेल्स आर कॉल्ड मोनोसाइट्स, सर्कुलेटिंग इन अ ब्लड आर कॉल्ड मोनोसाइट। whenever the monocytes migrates into the tissue, they are called macrophages. In macrophages, there are certain system of macrophages which is present in every part, such as in brain they are called myeloglial cells, in liver they are called Kupffer cells. So the system present in the tissue, they are called reticuloendothelial system भी कहा जाता है इनको। तो whenever the monocytes are present in tissue, they are called macrophages. फंक्शन क्या है मैक्रोफेजेस का? फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस एज एवरीबडी ऑफ यू नो एंड यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर that macrophages play an important role in phagocytosis. Tissue initiation of the tissue repair, we will discuss these both function later. Then secretion of inflammatory mediator, display antigen to the lymphocyte and response to signal from the lymphocytes. Macrophages activation के हमारे पास the point to be remember is the major pathways are the classical pathway and alternate pathway. There are two pathways. Now whenever the tissue injures, it release a IFN, ठीक है, इंटरफेरॉन। जैसे इंटरफेरॉन रिलीज होगा, देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ क्लासिकल पाथवे। मैक्रोफेजेस क्लासिकल पाथवे के थ्रू एक्टिवेट हो जाएंगे। दे विल सिक्रीट ROS, NOS, लाइसोसोमल एंजाइम to enhance or activate their macrobicidal actions. Wherever they also release the chemokines, such as you have read over here, the secrete mediators. The secrete mediators भी आपने देखा है। Here are the mediators, ठीक है। INF हो गया। अब now they will release the interleukin 1, 12, 23 to cause the inflammation. Whenever the inflammation happens, macrophages release the chemokines, you can say, invites the lymphocytes. They are either T or B lymphocytes. Whenever the T or B lymphocytes come, they clear the
they clear the area which containing the any kind of microbe or foreign antibody antigen. Whenever they clears, they release the signals in a form of the chemokines are interleukins. हेल्पर इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हेल्पर टी सेल्स रिलीज द इंटरल्यूकिन 13 and 4. These are the interleukins secreted by interleukin helper T cells, which will cause the activation of the alternated activated macrophage pathway. क्योंकि अब फेगोसाइटोसिस हो गया, किलिंग एक्शन हो गया, अब क्लासिकल पाथवे स्विच हो जाएगा इनटू अ ऑल्टरनेटेड एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस पाथवे में. अब इसके लिए नेगेटिव है और ये इसके लिए पॉजिटिव है. जैसे ही होगा ये ग्रोथ फैक्टर TGF बनाएगा, टिश्यू रिपेयर फिब्रोसिस होगी, जबकि आपके पास इंटरल्यूकिन 10 और TGB बीटा होगा तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होंगे. क्लासिकल पाथवे आपके पास इन्फ्लेमेटरी होता है और ऑल्टरनेट पाथ आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं. दोनों आपके पास रेगुलेट होते हैं. पहले आपके पास क्लासिकल होता है ताकि आपका माइक्रोब और फॉरेन बॉडी व्हाटसोएवर जो भी है उसको क्लियर किया जा सके, एंड देन रिपेयरिंग द बॉडी. अदर chronic inflammatory cell, lymphocyte, plasma cells, mast cell and eosinophils. Lymphocytes में everybody of you know there are two type of lymphocyte, T cells and B cells. Lymphocytes are mobilized in the setting of any specific immune stimulus. Infections, ठीक है, इन्फेक्शन में आ जाता है, या तो आपके पास इन्फेक्शन होगी तभी आपके पास लिम्फोसाइट्स वहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया पे रिक्रूट हो जाएंगे. एज वेल एज नॉन इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन. आपका नेक्रोसिस हो गया टिश्यू का नेक्रोसिस होगा. फॉरेन बॉडी ने किसी फॉरेन पैथोजन ने एंटीजन ने उस टिश्यू को डैमेज नहीं किया, उसकी नेक्रोसिस नहीं की, लेकिन देयर इज़ वहाँ पे नेक्रोसिस होगी, सेल डेड होंगे, केमोकाइन्स रिलीज होंगे विच विल लीड द मैसेज टू द लिम्फोसाइट्स टू बी रिक्रूटेड ओवर देयर. सो इस्कीमिक नेक्रोसिस और ट्रॉमा दे आर नॉन इम्यून मीडिएटेड. इनमें भी हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स आएंगे, और जो आपके पास इन्फेक्शन होते हैं उनमें भी आपके पास लिम्फोसाइट्स आएंगे. सॉरी फॉर द स्पेल ओवर हियर, इन्फेक्शन के हमारे पास गलत लिखे हुए हैं, देयर इज M इंस्टेड ऑफ N. Then T lymphocytes are further categorized into CD4 and CD8 positive. CD4 में आपके पास cytotoxic T cells होते हैं, helper T cells होते हैं. CD8 में आपके पास suppressor और memory cells होते हैं. CD4, as its name indicates, cytotoxic T cells का it has a killing effect and they directly kills the cell. Either they are a virus cell or a human infected cells such as in cancers. So it kills directly. It doesn't need anyone's help. Whereas CD4 cells, they need help to kill the to kill the cells or the antigen. They don't directly kill the pathogen or the cell, but they attach the antigen and secrete and cause the activation of the plasma cells, and those antibodies act against that cell, canceric cells or the foreign antigen. So cytotoxic T cells एंड वो डायरेक्टली किल्स करते हैं CD4 जो होते हैं. अब CD4 आर द हेल्पर T cells in your book. There are further 3 subsets of the T cell, TH1 और TH3 and TH17. ठीक है, जैसे आपके पास इन्होंने ये बताया हुआ है TH17. अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो TH1 होगा वो इंटरल्यूकिन सिक्रीट करेगा मैक्रोफेज वो आपके पास क्या करेगा, TNF वगैरह आपके पास वो क्या करेगा, IFN सिक्रीट करता है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है. TH2 आपके पास जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके पास इंटरल्यूकिन क्या करते हैं, सॉरी फॉर कन्फ्यूजन, लेट मी क्लियर इट. TH1 सबसेट ऑफ helper T cell, TH2 subset of helper T cell and TH17 subset of helper T cells. ठीक है, एक इसमें आपके पास क्या होता है कि TH1 वाले क्या करते हैं, आपका क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट करते हैं. क्लासिकल पाथवे आपके पास कैसे एक्टिवेट होता है, आपके पास इंटरफेरॉन वो रिलीज करते हैं. ठीक है, हेल्पर T सेल इंटरफेरॉन रिलीज करेंगे, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट इन्फ्लेमेशन. ठीक है, इसमें आपके पास मैक्रोफेजेस है, क्लासिकल मैक्रोफेजेस पाथवे, अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटेड भी रिलीज हो रहे हैं, लेकिन ये भी आ रहे हैं आपके पास ल्यूकोसाइट, ये हो रहा है मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गया. ठीक है, उसके बाद उन्होंने आपके पास TH2 सेल्स आ जाते हैं. TH2 आपके पास क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन जैसे कि आपने इधर पढ़ा था, दे क्या करते हैं,
इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 5 ये रिलीज करते हैं और आपके पास अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस पाथवे को एक्टिवेट करते हैं. अदर देन डेट दे आल्सो एक्टिवेट इयोसिनोफिल्स और देयर रिक्रूटमेंट भी करवाते हैं. इसके अलावा आपके पास TH17 होते हैं. जो TH17 होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, वो इंटरल्यूकिन 17 सिक्रीट करवाते हैं. ठीक है, और आपके मैक्रो ऐसे कीमोकाइंस रिलीज़ करते हैं जो आपके पास मोनोन्यूक्लियर सेल्स को, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स को, मैक्रोफेजेस को वहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया पे रिक्रूट करवाते हैं. प्लाज्मा सेल्स इन्होंने आपको पास बता दिया, आपके पास B सेल्स होते हैं. वेन एवर दे गोज टू टिश्यू दे आर कन्वर्टेड into a plasma cell. Plasma cells are responsible for making the antibodies against the infectious substances. ठीक है. अदर सेल्स में हमारे पास इयोसिनोफिल्स और मास्ट सेल्स आ सकते हैं. इयोसिनोफिल्स आपके पास क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अ डिफेंसिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन and as a part of immune reaction mediated by the IgE associated allergies. IgE associated allergies भी करवाते हैं, but they also very important in inflammatory sites around they are found in inflammatory site around the parasitic infection because the parasites are large, they can't be engulfed, so they are killed outside the cell. मास्ट सेल आपके पास कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी, कैन पार्टिसिपेट इन acute and chronic inflammation, cause allergies and well elaborated cytokines और TNF secrete करते हैं which play a beneficial role in combating disease and they are also cause allergies and IgE mediated responses भी देते हैं. Now you can see plasma cell, differentiated B cell produce antibodies. Eosinophils granules contain basic proteins which are very toxic to the parasites. Abundant in IgA mediated immune response. Mast cell large, elliptical, mononuclear, bone marrow derived, distributed in the perivascular and perineural A region. Found in both acute and chronic, bind to IgE, release histamine. ये आपके पास मास्ट सेल और eosinophil में दोनों एलर्जीज में इंक्लूड होते हैं, दोनों IgE mediated होते हैं, but they release the histamine, cause the allergic reaction wherever they cause the allergic reaction by the IgE or in infection they release the granule contain the basic proteins. Granulomatous inflammation, it is very important for you guys to remember because it is a distinctive pattern of the chronic inflammation. तो chronic inflammation होगी तो most of the time you will see a granuloma. Now what is a granulomatous inflammation? It is a form of chronic inflammation characterized by the collection of activated macrophages, often T lymphocytes, and sometimes associated with the central necrosis. Make it simpler for you is that whenever there is a granuloma, you will see you will have a tissue section of that part and undergo a microscopy with the H&E stain. You will see that there is a central cheesy apparent area. नेक्रोसिस की वजह से बहुत सारे सेल डेड हो गए हैं और देयर इज अ चीजी अपीयरेंस इन द सेंटर ऑफ द टिश्यू. दिस इज कॉल्ड द सेरेशियस नेक्रोसिस. ठीक है, आपके पास केशियस नेक्रोसिस हो जाएगी वहाँ पे, वो यू विल सी इन ग्रेनुलोमा में आपके देखेंगे केशियस नेक्रोसिस देखेंगे. देन बिकॉज मैक्रोफेजेस आर इन्वॉल्व इन द response, so you will see an outer layer of macrophages over the central necrotic area. Then macrophages recruit the recruits the lymphocytes. You will see the lymphocytes either they will be either a T or B lymphocyte. And whenever there is a prolonged duration of infection, there is a tissue damage. Whenever there is a necrosis, there won't be any repair. ठीक है, the replacement of the tissue नहीं होगी, but the repair will be done with the help of the fibroblast. Fibrosis होगी उस एरिया की, टिश्यू नॉर्मल फंक्शन में नहीं जाएगा. So there will be a fibroblast. Fibroblast make a thick rim around this whole area and make it wall off from the rest of the body. What is the benefit of this? Benefit इसका ये होता है कि this will not let the infection spread to other parts of the body. ठीक है, other parts of the body. But what is the disadvantage? It protects this granuloma protects the postcentral necrotic part or a pathogen which is inside it
from the degenerative or killing effect of any other substance which comes from outside the wall. Now here is mentioned a multinucleated giant cell. Whenever the macrophages, activated macrophages, what is a monocyte, macrophage, and activated macrophage? Monocyte is mononuclear leukocyte which circulate in blood. Macrophage, whenever they come in a tissue, it convert into the macrophage. What is the activated macrophage? Activated macrophage is एक्टिवेटेड मैक्रोफेज जो होता है ना, उसमें क्या होता है, ये एपिथेलाइड सेल्स. Epithelial, the activated macrophages may develop abundant cytoplasm and begin to resemble epithelial cells and called epithelial cells. Now, the activated macrophages are called epithelial cells. Why they are called epithelial cells? Because देखिए इसमें आपने पास तो इन्होंने बताया हुआ मैक्रोफेजेस है, फिर एपिथेलाइड सेल्स है. मैक्रोफेजेस में आपके पास देखिए आपके पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का देयर इज सो मैनी डिफरेंस बिटवीन द NC रेशियो. But here you can see in epithelial cell there is a large difference between the nucleus and the cytoplasm ratio. So they become the epithelial shape के हो जाते हैं, epithelial से resemble करते हैं क्योंकि उनके भी बिल्कुल membrane के पास nucleus होता है एंड पे और बाकी सारा साइटोप्लाज्म होता है. तो ये इसलिए एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आर कॉल्ड एपिथेलाइड सेल्स. व्हेनेवर द एपिथेलाइड सेल्स यानी कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस combine they form a multinucleated giant cell. These terms you should remember, these terms macrophages, epithelial cells or activated macrophages and multinucleated giant cells because they are the characteristic featured cells which are present in a chronic inflammation. So you are seeing this and there will be lymphocyte and fibroblast. जब भी आपके पास वो ग्रेनुलोमा का टिश्यू आएगा तो आपको ये सारे सेल्स वहाँ पे नज़र आएंगे और केशियस नेक्रोसिस आपको सेंटर में नज़र आएगी. टाइप ऑफ ग्रेनुलोमा, फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा एंड इम्यून ग्रेनुलोमा. फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा एक्चुअली जब आपके पास नॉर्मली आपकी बॉडी उसमें ग्रेनुलोमास नहीं बनाती, लेकिन वेन एवर द सुचर stage is too long to be engulfed by a single macrophage, it will lead to the formation of the granuloma. ठीक है. Immune granuloma in response to an infection, bacteria, parasite, virus, whatsoever. So epithelial cells we have discussed, giant cells. Some activated macrophages may fuse form multinucleated giant cells. Examples आ गई bacterial में tuberculosis, leprosy और syphilitic gumma. Parasitic में schistosomiosis and fungal में histoplasma आ गया, blastomycosis, coccidiosis immitis और inorganic metal और dust, silicone. Foreign body such as prosthetic, vascular graft and enormous sarcoidosis. सिस्टेमिक फैक्टर इन्फ्लेमेशन में आपके पास फीवर हो जाता है. फीवर व्हेनेवर साइटोकाइन्स स्टिमुलेट नेक्रोटिक फैक्टर इंटरलेकिन 1 स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन हाइपोथैलेमस एंड यू आर वेल अवेयर हाउ द प्रोस्टाग्लैंडिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ फीवर. Elevated level of plasma, level of acute phase protein. Acute phase protein are actually produced by the liver. They circulate produced by the liver, and whenever we are exposed to any kind of inflammation, their ratio increase in our body, and we can whenever there is a raise in a acute phase protein, you can say there is inflammation in a body, but you can't differentiate between the acute or chronic. Leukocytosis, of course everybody knows, whenever there is an infection, leukocytes have to be there to to reduce the inflammation, to remove the foreign body, and they need to be multiply more rapidly, they need to be grow more rapidly, so there will be a leukocytosis. ठीक है. आपके पास normally 4 to 11 होता है, but it may reach to the 15 to 16 microliter माइक्रो पर लीटर. इस वे सेप्टिक शॉक हो जाता है. ना वाई सेप्टिक शॉक है, पर आपके पास पैथोजन आया है, वो आपके पास बहुत थोड़ी अमाउंट के बजाय बहुत ज़्यादा अमाउंट में आया है. आपके पास साइटोकाइंस जो जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरलेकिन्स हैं, वो आपके पास बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में जो है ना वो रिलीज़ हुए हैं. उसने आपकी बॉडी को बहुत लार्ज एरिया पे अफेक्ट किया है. तो आपके पास क्या होगा कि सेप्टिक शॉक आ जाएगा. मोस्टली आपके पास TNF की वजह से होता है. लो ब्लड प्रेशर. सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरिया होता है वो आपके ब्लड में आ जाता है और फिर आपके पास सेप्टिक शॉक होता है, उसमें आपके पास DIC हो जाता है.
DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हो जाएगी, और उसके अलावा आपके पास लो आपका ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ये आपके पास सेप्टिक शॉक और हाई फीवर आपके पास आ जाएगा, मसल क्रैम्प स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे आपके पास सेप्टिक शॉक की रीजंस आ सकती हैं। Now thank you everyone for being there and for attending the lecture. I hope that this lecture will help you guys a lot in your further studies, and feel free to ask any question related to this topic to me. And if there is any query you want to ask, and please let me know if I have to do something better in further in certain areas, so I could convey you betterly in next time. Thank you all.